Hello, teachers. Imagine a classroom where your students are not just learning facts, they are actually creating stories and imagination that capture their learning journey. What if you could explain math through a story or bring a science concept to life in a short film? Welcome to digital storytelling, a powerful way to make your learning memorable and meaningful. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड देन हाउ यू कैन क्रिएट अ डिजिटल स्टोरी यूजिंग सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस और perhaps AI. And then we are also going to give you tips how you can apply this strategy into your classroom. Lastly, we are also going to touch upon your subject कि आपके सब्जेक्ट में डिजिटल स्टोरी टेलिंग की पैडागॉजी आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. First and first, what is digital story? So let's have a look. It is basically a short story in which narrators, means teachers, use text, images, videos, audios, and appealing content to create an interactive story. It is one of the creative and engaging techniques to bring into the classroom to teach any concept. But why this technique? What's the need? As you all know that 21st century का learner अपना ज़्यादातर टाइम टेक्निकल गैजेट्स में इस्तेमाल करके यूटिलाइज कर रहा होता है. सो व्हाई नॉट bringing their learning into a digital learning? And moreover, it's a fact that humans have had always learned from stories. So human is always interested in stories. तारीख में बड़ी हिम्मत है कि वो हमें आईना दिखा सके. So here are 3 easy squeezy steps on your screens for a teacher to make a digital story. Number 1, develop a concept and then find information to make a script. Number 2, add images, high quality images, GIFs and short animated videos. Then you can voice it over by yourself, or perhaps an AI tool can be helpful for you, or you can simply add text with sound. Number 3 step, you can use a PowerPoint or Canva and other tools to record and edit the video. Now, as I said to you earlier in this video, we are going to touch upon your subject. For example, science. Science में आप डिजिटल स्टोरी को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कोई टॉपिक को आप डिजिटल स्टोरी के थ्रू पढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिवर स्पीक्स. आज की हमारी स्टोरी का नाम है रिवर स्पीक्स. ओह वाओ, यू कैन मेक अ स्टोरी ऑफ अ रिवर बाय फोकसिंग ऑन वाटर साइकिल, इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी. इन स्टोरी, रिवर कैन बी अ नैरेटर और अ कैरेक्टर, और वो बोलेगा, who provides a habitat for species, ecological good and bad effects and impact of plastic usage, which is creating a disaster underwater. So इस तरीके से आप एक कोई भी टॉपिक को स्टोरी के थ्रू रिवर स्पीक्स इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं. नंबर 2, वी हैव हिस्ट्री. पुराना सब्जेक्ट. नो मैटर, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन स्टिल टीच हिस्ट्री concepts by digital story pedagogy. We can demonstrate a historical flashback where the river narrates the rise of civilization or an important event. Trade might be, perhaps transportation, or perhaps war, or perhaps a major flood. Now here are a few benefits when you apply this strategy into your classroom. So you really see is like it enhances students engagement. कि भाई रोज़ाना वो टीचर को देख रहे हैं कि वो आके लेक्चर दे रहा है, लेकिन आज एकदम से लाइट्स ऑफ होती हैं और प्रोजेक्टर के ऊपर एक स्टोरी चल रही है, साउंड है, लाइटनिंग है एंड कलरफुल, एंड देन देयर इज़ अ नरेटर ऑल्सो स्पीकिंग. सो दैट रियली impacts a lasting learning experience, of course. So with that, here we end this video. Thank you so much for watching. Thank you, Ms. Kiran Qasim Ali, for providing me this opportunity to present digital storytelling for all the teachers out there.